हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम इन डे 31 ऑफ 100 डेज चैलेंज। गाइस, अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू कि पहले वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो पहले क्वेश्चन। अगर नहीं बनता तो सोल्यूशन देख लो, अगर बन जाता फिर भी सोल्यूशन देख लो। शायद आपको अप्रोच समझ में आए या अप्रोच आपको पसंद आए। क्वेश्चन में देरी नहीं करेंगे, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेट मी कीप माई दैट माइक यू कैन से टू गेट अ गुड ऑडियो क्वालिटी। ठीक है, चलो। So yeah, a cache memory unit with capacity of n words and block size of b words is to be designed. If it is designed as a direct mapped cache, the length of the tag field is 10 bits. If the cache unit is now designed as a 16-way set associative cache, the length of the tag field is okay. So what they are telling, cache first of all, scenario number one अगर मैं बात करूं कि capacity of a cache memory unit with the capacity of n bytes. So cache size is given that n words, any byte कुछ भी. Block size they are giving that is a b. If it is designed as a direct map cache, the length of the tag field is 10 bits. So we know that 10 bits tag is given that 10 bits. Okay. Now we know that what we know that कि in direct maps, in a direct map, in a direct mapped cache, how we are going to design, how are you going to divide the memory address. So memory address is the processor, whatever processor is referring the address divided into three parts. One is a tag is given how much, tell me, that is a 10 bits. Okay, what will be the this offset, what will be the this offset cache, n words cache is given, n words cache is given, then a cache lines, how many cache lines will be there? Cache lines will be n by b. Okay, so what will be this field? This will be log n minus log b field. Okay, now what will this be? This will be the log b. Simply we know that. Okay, now what they're telling, if the cache unit is now designed as a 16-way set associative cache, the length of the tag field is okay. So in set associative, you know that in set associative, see, what is the format? This again format is same, only three part. So in a direct mapped cache, in direct mapped cache, you know that this is the tag field, this is the line offset, this is the block offset, right? Here block offset is fixed, again here is a set offset, here is a set offset, and what is there? There is a tag field again. Okay, set offset will be the number of sets. So how many sets we are going to create? You can say that we are going to divide line divided by 16. Okay, so actually this field will come, field will take less than log 4, log 16 bits. How I will tell? See, this will again take log b, and this will become n by 2b, n by 2b, because we are going to divide by b also, again we are going to divide by 16 also. So this will become how much? This will become log n minus what you can say, that log b minus what you can say, log b minus 4, because this is the log, this is the what, this is the sets, total sets. N by b means what? Total number of lines divided by 16 sets we are going to calculate. Okay, this field we don't know, this field we have to calculate. Okay, but this address is fixed. So now we can say that, simply we can say that ki 10 plus log n minus log b, earlier जो हमने एड्रेस कैलकुलेट किया था, प्लस log b is equal to x plus log n minus log b minus का 4 and this one plus log b. I can simply say that simply. So log b से log b यहाँ कट गया, log b से log b यहाँ कट गया, log n से log n ये कट गया, यहाँ पे बचा 10 plus 0 is equal to x minus 4. So x will become 14. Simply answer is 14. और यहाँ पे पेन उठाने की जरूरत भी नहीं थी वैसे, अगर मैंने सॉल्व कर दिया दैट इज गुड थिंग। कैसे प्रूफ है ये आपको सिंपली बताना चाहिए कि अगर हमारे पास लाइन पहले मान लो 2 पावर x थी, अब हमारे पास लाइंस कितनी बचेगी? ब्लॉक ऑफसेट के लिए 16 से डिवाइड किया तो 2 पावर x माइनस 4, और ये x माइनस 4 जो माइनस हुआ है, ब्लॉक ऑफसेट तो मेरा फिक्स है, ये 4 कहाँ गया है? टैग वाले पार्ट में गया है। तो टैग पहले अगर मेरा 22 था तो अब 22 प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दैट इज अ लॉजिक दैट यू हैव टू रिमेंबर।
सो दिस इज द डे 31 गाइस। आई थिंक यू गॉट इट द कॉन्सेप्ट। सो अगर हमारे पास वर्ड्स में ऐसा कुछ दिया हुआ है, वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो आपको लगता है कि समझ में नहीं आता मतलब ऐसे, तो you can just take examples also, but you have to just be careful, be smart to solve this particular question. And for that particular question, I think you should take 10 to 20 seconds with the practice. Okay, maximum 30 seconds. So that is for day 31 guys। और प्रैक्टिस सीरीज में बने रहो, ऐसे डे 32 में मिलते हैं। अगर कर लिया है सॉल्व, अगर आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया, एक छोटा सा कमेंट, छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब करके चले जाना, चैनल में आपका योगदान रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डे 32 में मिलते हैं।